To make a steamed fish, we need a fish. I took a local fish. You can take any kind of fish, pomfret which is available. Coconut dry, you can take a fresh coconut also. Banana leaves, fresh coriander, mint, lemon, ginger piece, 3 pieces of garlic, butter, 1 spicy chili. So let's start. First we make a paste. I put ginger, garlic, green chili, fresh mint, coriander. You can see the paste is ready now. Now I'm going to add lemon juice, and salt. Just one more time we can. फिश को रैप करने से पहले हम थोड़ा बनाना लीव्स को गर्म कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा. यू कैन सी, और फोल्डिंग में हमें इजी रहेगा. ये देखिए बनाना लीव्स बहुत सॉफ्ट हो गया है, और जिससे रैप करने में भी इजी रहेगा. पहले हम मिडल में butter, make a packet, and then अब हम फिश को स्टीम करेंगे. स्टीम करने के लिए पहले हॉट वाटर, ये मैंने स्टैंड रख दिया. कवर कर. After 15 to 20 minutes, our fish is ready now. Close the induction and take out fish here. Be careful, it's very hot.
Now it's time to open.